Perfect. Welcome to today's session, everyone. Assalamu alaikum. We'll be working with pivot tables for 2 sessions. Then we'll be doing 2 sessions on VLOOKUP. Today, the plan was conditional formatting, but in pivot tables itself, I'll cover conditional formatting for all of you. Now, all of you have the pivot table folder downloaded. In that, there is one uh, PPT called slides, okay, which has all the notes on pivot tables. Then you have one file called Global Super Shows Orders. This is the file that we will be working on for today. Okay, you can open the file. You can open the file. Open the file and wait. Now, can anyone of you tell me what does this data look like? Can anyone of you tell me what does this data look like? What do you think the data is for? You can put it in the chat, or you can unmute and answer however you want. You can put it in the chat, you can unmute and answer. You have the file, everyone. What do you think the data is for? What is the kind of analysis that you think we can do on this data? Anyone? Maybe it's for an online store. That's okay, mashallah. So essentially, it's data for some orders being purchased, then the orders being shipped. There's a few columns for profit and loss, and then we have a few additional columns as well, right? So I have the order date in which the order was placed. I have the ship date in which the order was shipped. Customer name, city, state, country, region, market, segment, subcategory, sales, quantity, discount, and profit. Perfect. Now, when I want to create a pivot table, because now if I want to analyze this data set, okay, the advantage with pivot table is that I have 51,000 rows in this table. I have 51,000 rows in this table. Now, if I ask you that, tell me how many, yeah, what is the total sales for each market? If I ask you this question, what is the total sales for each market? Now, if I apply a filter and I see shortcut to apply the filter is Alt 80, and I press Alt down arrow key, I can see that there are 5 distinct markets in my data, right, in which the company operates. 5 distinct markets. Now, within these 5 markets, or for these 5 markets, if I have to look at the total, I cannot simply select one market and assume that the total from the sales column, which is being displayed here, $7,83,773, right? That is not the total for the USCA column, right? Or if it is the total, it is at a transaction level. It is at a transaction level. What I mean by that is for each customer. So, for example, if I filter down another customer, this customer has made multiple transactions on different dates. This customer has made multiple transactions on different dates, right? So, if I ask you a very simple question, and this is a very simple question that might come in, okay, what are the total sales for each market? So what I would need to do is I will have to first I will show you कि Excel में आप अगर formula से ये चीज करोगे तो कैसे होगी, ठीक है? आपको एक function use करना पड़ेगा unique. You don't have to do this. You can just look at the example. Then I will have to use something called a SUMIF. SUMIF किया था ना हम लोगों ने. So I'll have to choose my range, put in my criteria, and then supply my sum range, which is the sales column. Yeah. एक तरीका तो ये है. तो इससे मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स मिल जाएगी. तो मैं दो फॉर्मूलाज लिख सकता हूँ, ठीक है? बट अब इसके लिए आई नीड टू नो व्हाट फॉर्मूला टू राइट. आई नीड टू नो व्हाट function to use. Right? So I'll have to write 2 functions. Another method that I can use is it's called a group by. So Excel now there is a function called group by, which is there in SQL as well, which is in SQL, but now it's there in Excel as well. I won't say I want to group by the markets. यानी मुझे distinct markets चाहिए जहाँ पे मेरा values will come from the sales column where I want to do a sum and I want the headers. So ये इस तरीके से बना देगा. So this is one formula that is giving me the output, right? But then again, formula लिखना, अब आपके पास अगर group by है, नया वर्जन है तो आप group by यूज कर सकते हो. आपके पास नया वर्जन नहीं है
तो आप यूनिक भी नहीं यूज कर पाओगे, आपके पास सिर्फ समिफ होगा। तो फिर आप कैसे करोगे उस केस में? उस केस में यू विल हैव टू copy the list of markets, come outside, then in the data tab I have this option called remove duplicates, right? This option over here is called remove duplicates. So I'll have to select my entire data, and then I'll have to click on remove duplicates, and then it opens this box for me where it says that to delete duplicate values, select one or more columns. Right now I have selected only one column and I press OK. So it will give me only the duplicate values or the distinct values, and then I can do a summary. मतलब multiple steps है, ठीक है। अब देखते हैं pivot में सेम चीज हम कैसे कर सकते हैं in a few clicks. Now when you're creating a pivot table, remember you not select an entire column or you will not select an entire row. To select an entire column, you generally press Control plus Spacebar. To select an entire row, you press Shift plus Spacebar. Now, what happens when I select an entire column is that till the very last row, which is the 10 lakh row, all the data gets selected. So when I create a pivot table after selecting one column, thinking that it will take the entire data set, it will not. It will only take that one specific column. It will only take that one specific column. Do you see here? It will only take that one specific column, right? And I won't be able to do much with it. Secondly, when that column also, I'll have a lot of blanks, right? I'll have a lot of blanks as well. So I want to create a pivot table that has all my columns, To do that, I will not select anything. I'll just keep my active cell inside any one of the cells of the data. I will simply go to insert, right? I'll go to pivot table and I'll choose from table range, and I'll say, and I want to create the pivot table on a new worksheet. I can create a pivot table on the same worksheet as well, but since I have 15, 16 columns, I would rather do it on a new worksheet. So I'll just choose new worksheet, right? One more time, to insert a pivot table, I go to pivot table, insert pivot table from table range, and I press OK, and it will create the pivot table for me. It will create the pivot table for me. Okay, it will create the pivot table for me. Now, the shortcut to create a pivot table is, so when I press Alt, do you see all the shortcuts get enabled? So the shortcut to create a pivot table is Alt, then N, then V, then T, and then Enter. So the shortcut to create a pivot table is Alt plus Alt, N, V, T, and then Enter. Now here you have to press one by one. You don't have to hold one key to press the other. You have to press this one by one. You don't have to hold one key to press the other. Can you guys not see my screen? Is my screen frozen? Yes, sir. So you will have to tell me now. How will I know if it's frozen? Or if you're listening to me, you have to tell me that my screen's frozen, right? I have to reshare. Coming back. Can you see my screen now? Yes, sir. It's not frozen now, right? Yes, sir. Okay, cool. So what I was saying is, to insert a pivot table, I can press the shortcut Alt and VT enter, or I can go to insert and I can go to pivot table here, and I can choose from table and range. Okay. Now, once I create a pivot table, it asks me if I want to create it on a new worksheet, and ideally, yes, you would want to create it on a new worksheet unless you're working with a very small data set. Now, first things first, when you create a pivot table, on the right hand side, you will see this pivot table fields option, and on the sheet itself, generally from A3, this is one setting in the option. So anytime you create a pivot table, it will generally start from A3 itself. It will generally start from A3 itself. Anytime you click inside this pivot table area, that can be easily identified, right? You will get two new tabs on the right top corner. You will get two new tabs, right? You will get a pivot table analyze, and you will get a design tab. You will get a pivot table analyze, and you will get a design tab. The new tab is something that is there in my window. You can ignore that. You will get a pivot table analyze and a design tab. ठीक है? इसमें सारे options होते हैं. Pivot table analyze में you have extreme right पे show में you have pivot table field is. तो ये जो pivot table fields है जहाँ पे आपके सारे columns हैं जिनसे आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, वो सारे फील्ड लिस्ट में होते हैं. कभी आप अगर गलती से फील्ड लिस्ट बंद कर दो तो आप पिवट टेबल एनालाइज में आके फील्ड लिस्ट को यहाँ से इनेबल कर सकते हो. ठीक है. नाउ everyone just create the pivot table, and then I'll show you a few settings that you can enable before you start making your pivot tables. That'll make your life a little easier, and then we'll do a lot of examples. Okay, then we'll do a lot of examples. Right, just create the pivot table and let me know in the chat if you have created the pivot table, and then we'll do a few examples.
Done? Sir, do we need to select the whole? नहीं, आप पूरा डेटा नहीं सिलेक्ट करोगे, बिकॉज उस केस में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ब्लैंक रो है मेरे पास यहाँ पे और मैं यहाँ पे कंट्रोल ही दबाता हूँ, क्या वो ब्लैंक रो का डेटा सिलेक्ट होगा? ब्लैंक रो के नीचे नहीं होगा, राइट? दैट डेटा वोंट बी सिलेक्टेड. बट इफ आई वर टू इंसर्ट अ पिवट टेबल फ्रॉम दिस, राइट, again by default it will not select. So generally you will not press control A because blank row अभी अगर visible है, so you need to just ensure what your last row and your last column is. तो जब आप pivot table create करते हो तो यहाँ पे आपको it shows you your range. ठीक है, यहाँ से आप एक बार range validate कर सकते हो before you press OK to create the pivot table. But एक column, एक row या selecting the entire data set will cause an issue if there is a blank column or a blank row in between. Perfect. Now that all of you have created the pivot table, the first setting that I want all of you to enable is pivot table field में right hand side पे gear icon आपको दिखेगा. Okay, come back on my screen. You will see this gear icon. You will change the first option. जैसे अभी जो हमारे कॉलम्स है वो हमें यहाँ दिख रहे हैं और जिन्हें मुझे जहाँ पर ये कॉलम्स ड्रैग करना है वो सारे फील्ड्स यहाँ पर हैं. तो इसमें मुझे ना बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है और अगर मैं एक से ज़्यादा डाल देता हूँ किसी भी एक फील्ड में तो वो बड़ा क्लटर्ड हो जाता है. Okay, it becomes very cluttered. So I don't want to do that. I don't want to do that. I want to have a easier view to access my data, right? To analyze my data, to look at the cuts of my data. Okay. So what I will do is I'll click on the gear icon and I will choose the second option, field section and area section side by side. ठीक है, एक आप अभी मत कीजिए, एक आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है, फिर और एक जो ऑप्शन करना है वो भी बता देता हूँ, दोनों आप साथ में करना. पहले ये वाला देख लीजिए, फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड. तो यहाँ पे यू गेट अ मच बेटर व्यू क्योंकि आपके सारे कॉलम्स आपको यहाँ मिल जाते हैं और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना भी बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है, नाउ दूसरा ऑप्शन जो आपको इनेबल करना है, पहला ऑप्शन था गेयर आइकन पे जाके सेकंड वाला चूज करना है, फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड. द सेकंड ऑप्शन दैट यू हैव टू इनेबल इज you will right click on the pivot table, not anywhere outside, on the pivot table area. You will right click and you will choose pivot table options. You will choose pivot table options. When you click on pivot table options, you will get a dialog box that will display like this, options box. From here you will go to display. From here you will go to display, and display में you will enable this option called classic pivot table layout. Classic pivot table layout. आप जब ओपन करोगे पिवट टेबल ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट लेआउट में रहोगे, लेआउट एंड फॉर्मेट में. प्लीज गो टू डिस्प्ले एंड चूज और इनेबल क्लासिक पिवट टेबल लेआउट. प्लीज इनेबल दीज टू ऑप्शंस. वो गेयर आइकन वाला कर दीजिए और ये वाला ऑप्शन क्लासिक पिवट टेबल लेआउट को इनेबल कर दीजिए. प्लीज कंप्लीट दीज टू ऑप्शंस. Please complete these two options. You can put a yes in the chat if you're done. हाँ Arhan, you have a question? Yes, sir, done. अच्छा, नहीं, I thought you raised your hand so you had a question. बाकी लोग, have you guys done it? I have 48 people on the call. And I got a yes from hardly 5 people. हाँ, cool. Great. So I think I cancelled. Pivot table option, display and classic pivot table layout और OK दबाना होगा for the change to be enabled. Now जैसे ही आप classic pivot table layout बनाते हो आपको बहुत easy view मिल जाता है to create your pivot table. पहले वाले व्यू में ना आपको पता नहीं कहाँ क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. ठीक है, यू वुड हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप टू द राइट एरिया. मैं ये फील्ड्स भी आपको अभी समझाऊंगा. ठीक है, और जब आप पिवट टेबल का जो क्लासिक लेआउट ऑप्शन इनेबल करते हो, इट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू वर्क विथ योर पिवट टेबल. इट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू वर्क विथ योर पिवट टेबल. नाउ आई विल मिनिमाइज द रिबन फॉर नाउ. नाउ if I want to have my sales for my markets, I will have to drag the market somewhere either on the rows or on the columns. Okay, either on the rows or on the columns. Now, please pay attention. रोज में आप जो भी डालोगे वो वर्टिकली आएगा, कॉलम्स में आप जो डालोगे वो हॉरिजॉन्टली आएगा बिकॉज दैट विल बिकम कॉलम हेडिंग्स. रिमेंबर, दैट विल बिकम कॉलम हेडिंग्स. वैल्यूज में आप वही डालोगे जो वैल्यू वाले फील्ड्स हैं. जो वैल्यू वाले फील्ड्स है लाइक सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, दीज आर द फील्ड्स दैट विल गो इन वैल्यूज. दीज आर द फील्ड दैट विल गो इन वैल्यूज. ओके, नाउ if I have to, or let's say if I put customer name in values, what is going to happen? Can anyone tell me what will happen if I put customer name, which is a text column, in values? What will happen if I put customer name, which is a text column, in values? Anyone?
एक टेक्स्ट कॉलम पे क्या एग्रीगेशन हो सकता है? मैं क्या उस पे सम कर सकता हूँ? नहीं. कैन आई डू एन एवरेज? कैन आई डू मिन? कैन आई डू मैक्स? नो. No. What is the aggregation that I would? It will count the number of customers. Exactly. Absolutely correct, Mashara. Right? So it will count the number of customers. Now, what I want to do now is I want to create sales for my markets. So मैं क्या करूँगा? मैं market वाली field को I can drop it in rows over here as well. I can come and drop it in rows over here as well. Okay? So I will drop it either in my rows field on the right, or I can drop it in the pivot table directly. जहाँ पे लिखा है drop row field here, I can simply drag my market there. Okay? And I want to look at my market. I want to look at the sales for my market. So I can either click on sales. देखिए आप यहाँ से ना click भी कर सकते हो. But the issue is when I click on market, it might go to either row or columns if there are less number of values. So if I click on category, okay, it might either go to row or columns by default. Pivot table might somehow assume that it has to go to columns. And if I have my market in my columns, that is not going to make a lot of sense. Okay? So I would want my market in my rows. Right? So I'll put my market in my rows, and I will put my sales values in the sales field over here. I can put it over here as well. I can put it over here as well, and I can check the box as well. I can check the box as well. Okay. So I added my markets to my rows and my sales to my values. Please do this, everyone. Please do this, everyone. I'll just keep it here. Everyone's reference. Let me know if it's done. Great. Now, a lot of times when you're adding numbers, right, in pivot tables, you have to do a formatting. आप उनको शायद 2 decimal places में दिखाना चाहते हो. You want to add a comma. You want to not show any decimal places, right? Ideally, we would show 2 decimal places, right, and have commas as well. So what I will do is I will come to the first value, which is in B5. I'll come to the first value, which is B5. I'll press Control Shift down. I'll press Control Shift down. So it will select all the values. Then I will press the shortcut Control Shift 1. I'll press the shortcut Control Shift 1. वो मेरे सारे वैल्यूज को फॉर्मेट कर देगा. वो मेरे सारे वैल्यूज को 1 क्लिक में फॉर्मेट कर देगा. वरना मुझे मैनुअली अगर ये करना होता तो आई हैव टू कम टू होम. यहाँ से डेसिमल वैल्यूज मुझे कम करने पड़ते. यहाँ से मुझे नंबर फॉर्मेट चूज करना पड़ता और फिर अकाउंटिंग फॉर्मेट या कॉमाज ऐड करने पड़ते यहाँ से. इट इज अ 2-step process. You can press the shortcut Control Shift 1 after selecting your numbers. You can press the shortcut Control Shift 1 to format your numbers with commas and up to 2 decimal places. With commas and up to 2 decimal places. With commas and up to 2 decimal places. Please try this. Control Shift 1. Right. Control Shift 1. I'll just call this sheet sales by market. Yeah, and please rename the sheet as sales by market because we'll be doing 2 sessions. So we just need to know what we've covered in the first session. So whatever is remaining, I'll cover that in the next session. Is this done, everyone? Control Shift 1 is a shortcut. It will allow you to format your numbers in or outside of a pivot table. Any numbers that you highlight or select with 2 decimal places and a comma. It will format it 2 decimal places and a comma. Okay. Now, when you're working with pivot tables, after a point, आपके पास बहुत सारे pivot tables हो जाएंगे, and you would want to ensure that you are able to interact with one pivot table, multiple pivot tables, right? Using some slicer, some filter, or some field. Now, if I want to do that, I would need to know what is the pivot table called, right? So मुझे pivot table को name देना होगा because after a point, if you have like 10 pivot tables, you will lose track of what name was given to what pivot table because the default name होता है that is pivot table 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. So if I want to name my pivot table, I'll have to come to the pivot table analyze tab. I'll have to come to the pivot table analyze tab. And in the pivot table analyze tab, I'll have to come to the very left. And here I can choose a pivot table name. So I will call this sales by market. I'll call this sales by market. तो उसको मैंने एक नेम दे दिया बस ताकि जब मैं दूसरे पिवट टेबल के साथ वर्क कर रहा हूँ और मुझे अगर किसी पिवट टेबल को इंटरेक्ट करवाना है, चूज करना है कि वो किससे इंटरेक्ट करे, तो मुझे नाम पता होना चाहिए. अदरवाइज आई हैव टू कम टू द शीट, find the pivot table. It becomes a very big hassle.
Now, please rename your pivot table. I'll just be zoomed in on this for a while. I hope this is done. Cool. Now, what I can do is, if I want to create one more pivot table, I can create that pivot table on a new sheet, or I can do it on the same sheet, right? We'll do it on a new sheet. So you will come back to orders compact, you will go to insert, and you will create a new pivot table, or you will press the shortcut Alt N V T enter. You will press the shortcut Alt N V T enter. Don't hold any of the keys. Press them one by one. Press them one by one. Okay. Once you create the new pivot table, come back on my screen. Now tell me, if I have to find out which are my top 10 customers, how do I do it? If I want to find out across the globe who are my top 10 customers, what do I do? Just the maximum sale. This is the maximum sales. So if I have to do it on this sheet, orders compact, how will I do it? If I have to do it on the orders compact sheet, how will I do it? How do I get my top 10 customers from this data? Okay. So in this table, since Filtering by sales figures for each. but here if I filter, right, if I filter largest smallest here, that is not going to give me the correct result because one customer has made multiple transactions, right? So I'll first have to create a unique list of customers, then do a sum if, and then do a sort. Then do Yes, a sort. summit pivot table by summit sum of pivot Right. from that. I cannot do it from the original data set without writing a formula, right? So if I had to do it here, I would essentially be doing again, I will have to do a unique first to get unique list of my customers. Okay. Once I do that, then I will have to do a sum if, right? Sum if, and my summary will be sales. Right? And once I have this, and if I want to sort this entire thing, I'll have to say equal to sort. I'll have to select this entire area, sort by sales in a descending order. कुछ इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा. I'll have to write three formulas. I'll have to write three formulas too. So there is a formula to sort also. We'll in the last session when I show you dynamic arrays, no, I'll only cover dynamic arrays. तो जो Excel में नए फंक्शन है वो मैं आपको लास्ट सेशन में बता दूंगा. This is more from an awareness perspective. Now let's come back to a pivot table. अगर मुझे यहाँ पे मेरे top 10 customers देखने हैं, तो हाँ, by the way, अगर आप क्लासिक pivot table layout enable नहीं करते हो, तो भी आप काम कर सकते हो pivot table के साथ, लेकिन इसमें drag and drop functionality pivot table पे नहीं होती है. तो मैं कुछ ड्रैग करके पिवट टेबल पे नहीं ड्रॉप कर सकता हूँ अनलेस वो क्लासिक पिवट टेबल लेआउट में है. तो मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्टली यहाँ करना होगा राइट हैंड साइड पे इन माय फील्ड्स ओवर हियर. तो अगर आप क्लासिक पिवट टेबल इनेबल नहीं कर रहे हो, आइडियली करना चाहिए आपको. सर इट्स इजियर टू वर्क विद. इट इज इजियर टू वर्क विद. ठीक है. सो आई कैन क्लिक ऑन डिस्प्ले, come back and say enable classic pivot table layout. Now here I want to put my customer names in my rows. I want to put my customer name in my rows. So I will get that total customers are around 796. यहाँ नीचे मुझे काउंट दिख जाता है. ठीक है. छोटे मोटे एग्रीगेशन यहाँ दिख जाता है. सो टोटल कस्टमर्स आर 796. ठीक है. नाउ इफ आई वांट टू गेट द सेल्स, सो आई विल पुट सेल्स इन माय वैल्यूज एरिया. आई विल पुट सेल्स इन माय वैल्यूज एरिया. ठीक है. आई जस्ट क्लोज पिवट टेबल फील्ड लिस्ट फॉर नाउ. मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी. परफेक्ट. सो आई हैव माय कस्टमर नेम एंड आई हैव माय सेल्स. डज एवरीवन हैव दिस?
I just put my customer name in the rows field and my sales in the values field. I just put my customer name in the rows field and the sales in the values field. Okay. Now I can simply come to B5, cell B5, do a control shift down, select all my numbers and press control shift 1. Control shift 1 for formatting, no other reason. Control shift 1 only for formatting, no other reason. Control shift 1 only for formatting, no other reason. Now, once I have formatted this, now everyone back on my screen, I will right click on any of the numbers. I will right click on any of the numbers and I will say sort largest to smallest. Okay? I will say sort largest to smallest. तो मुझे मेरे टॉप 10 कस्टमर्स यहाँ से दिख जाते हैं, लेकिन मुझे सारे कस्टमर्स मिल रहे हैं यहाँ पर. मुझे 796 कस्टमर्स दिख रहे हैं in the descending order of their sales, right? So please sort everyone. Please sort your data. Right click on a number, not on the column. Right click on a number, not on the column. Right click on a number, not on a column. Right click on a number, not on a column. Okay. So right click, sort largest to smallest. Once you do this, after this, you will have to click on. अच्छा, by the way, आपको यहाँ पे कस्टमर नेम नहीं दिख रहा होगा ना, आपको यहाँ पे रो फील्ड दिख रहा होगा, करेक्ट? What are you guys seeing over here? Customer name or row field? अच्छा, for those who are not seeing customer name, तो होता क्या है जब आप नॉर्मल पिवट टेबल बनाते हो ना, तो पिवट टेबल बनता है कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में, ठीक है? तो आपको यहाँ रो लेबल दिख रहा होगा. अगर आपको रो लेबल दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार डिजाइन में जाना पड़ेगा, ठीक है? एक बार आपको यहाँ डिजाइन में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको रिपोर्ट लेआउट में जाना पड़ेगा, डिजाइन एंड रिपोर्ट लेआउट, और यहाँ पे चूज करना है टैबुलर फॉर्मेट, टैबुलर फॉर्मेट, टैबुलर फॉर्म, स्टूडेंट टैबुलर फॉर्म. अगर आपने क्लासिक पिवट टेबल लेआउट इनेबल किया हुआ है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपने क्लासिक पिवट टेबल लेआउट किया हुआ है तो इन दैट केस यू माइट नॉट हैव टू डू इट, यू माइट नॉट हैव टू डू इट, ठीक है? अगर आपने नॉर्मल पिवट टेबल बनाया है, अगर आपने नॉर्मल पिवट टेबल बनाया है, ठीक है, और उसमें आप कस्टमर नेम और सेल्स डालोगे, राइट, तो मेरे इसमें ऑप्शन टर्न्ड ऑन है बाय डिफॉल्ट, बट दिस इज व्हाट यू विल सी, राइट? यू विल सी रो लेवल, ठीक है? Perfect. I hope all of you have sorted your data. Now what I want to do is on the customer name drop down, this one, on the customer name drop down, I want to go to this option called value filters. So customer name जिस सेल में लिखा हुआ है, फिल्टर नहीं लगाना है आपको, बस जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है डिफॉल्ट उस पर क्लिक करना है. देन आपको जाना है वैल्यू फिल्टर पे, and in value filter you have to choose the last one which is top 10. In value filter you have to choose the last one which is top 10. In value filter you have to choose the last one which is top 10. ठीक है, टॉप 10 पे जब आप क्लिक करोगे तो इट विल शो यू टॉप 10 जैसे नेम, आप 10, 15, 20 जितने दिखाना चाहते दिखा सकते हो. अभी के लिए आप कर दो टॉप 5, अभी के लिए आप कर दो टॉप 5, ठीक है? अभी के लिए आप कर दो टॉप 5 and when you press OK you should only see your top 5 customers. Everyone, one more time, click on this drop down, go to value filter, wherever the word customer name is mentioned, click on that drop down, go to value filter and then click on top 10, then click on top 10, okay? Then click on top 10 and once in top 10 आप यहाँ पे 5 कर देना, ठीक है? और जब आप ओके दबाओगे आपको सिर्फ टॉप 5 कस्टमर्स दिखेंगे. आप जब ओके दबाओगे तो आपको सिर्फ टॉप 5 कस्टमर्स दिखेंगे, ठीक है? आपको सिर्फ टॉप 5 कस्टमर्स दिखेंगे, आपको सिर्फ टॉप 5 कस्टमर्स दिखेंगे. Please do this.
Please get the top 5 customers. किसी को डाउट है? अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे बताइए, ठीक है? Anyways, you will have to recording. The idea is to just give you an awareness. Okay. You can do it hands on also with me. अगर आप अभी hands on follow through नहीं कर पा रहे हो, that is also absolutely okay. आप you can go back and have a look at the recording. I have YouTube videos also on this. I'll share those also with you after we do the 2 sessions. Perfect. Now, if I these are my top five customers across my entire geography, whatever geographies I operate in. ठीक है, उन सारे कंट्रीज के टोटल मिला के टॉप 5 कस्टमर्स। अगर मुझे देखना है हर मार्केट में, तो मुझे ये देखना है कि मेरा हर मार्केट जो है उसमें मेरे टॉप 5 कस्टमर्स कौन है। ठीक है, तो मैं वो कैसे देखूंगा? कैन एनीवन टेल मी? If I want to look at who are my top 5 customers in each market, what is the next step that I will have to do? What is the next step that I will have to do? So what I will have to do is I will have to take markets and simply drag it to the left of customer name यहाँ पे, and in one single click I get my top 5 customers in each market. I get top 5 customers in each market. In one single click I get top 5 customers in each market. In one single click I get top 5 customers in each market. Okay. So no calculations required, just simple drag and drop. Simple drag and drop. Please try this, everyone. Please try this, everyone. Please rename this sheet as top n customer. The top n cust लिख दो. And please rename the pivot table also. Please rename the pivot table by going to pivot table analyze, then going to pivot table name and choosing top n. Then choosing top n. And choosing top n. And choosing top n. Top n customer लिख दो ताकि याद रहे, top n cust, ताकि we're able to remember when we want to connect these pivot tables. Perfect. Now come back to orders compact sheet. Whatever we do, we'll be doing it on multiple sheets. Okay. Whatever we do, we'll be doing it on multiple sheets. Now create another pivot table, everyone. Create another pivot table, everyone. I'll right click, quickly enable pivot table, classic pivot table layout. Okay. Quickly I'll enable classic pivot table layout. Now everyone, please do repeat the customer name step. Repeat the customer name step. Repeat the customer name step. यानी टॉप 10 कस्टमर्स दिखाइए। पहले आप सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट करने के बाद आप फॉर्मेटिंग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F1 से, फिर आप कस्टमर नेम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वैल्यू फिल्टर में जाएंगे एंड देन यू विल गो टू टॉप 10 एंड यहाँ से यू विल गेट टॉप, यहाँ पे टॉप 10 रख लेना, यहाँ पे टॉप 10 रख लेना इस वाले एग्जांपल में। जस्ट कीप टॉप 10 कस्टमर्स। इस वाले एग्जांपल में जस्ट कीप टॉप 10 कस्टमर्स। इस वाले एग्जांपल में जस्ट कीप टॉप 10 कस्टमर्स। ठीक है। नाउ प्लीज ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लो एवरीवन, देन आई विल शो यू अनदर ऑप्शन दैट यू विल हैव टू टर्न ऑन। ठीक है, अभी
जिसे मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, तो ये जो पूरा लिस्ट है ना, पूरा कॉलम है। अभी कभी कभी क्या होता है, जब आप कुछ भी फॉर्मेटिंग करते हो, कुछ चेंज करते हो, कोई फील्ड ऐड करते हो, कोई फील्ड टर्न ऑफ करते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये जो कॉलम्स है ना, वो ऑटोमेटिकली रिसाइज होते रहते हैं। तो जो पिवट टेबल का मेन आइडिया है कि यू शुड हैव, द पॉइंट ऑफ अ पिवट टेबल इज दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डैशबोर्ड सॉर्ट ऑफ अ व्यू इन एक्सेल, वेयरइन एक ही शीट पे आपने मल्टीपल पिवट टेबल्स और चार्ट्स ये सब बनाए हुए हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। राइट क्लिक कीजिए किसी भी वैल्यू पे या टेक्स्ट पे कहीं पर भी, देन गो टू पिवट टेबल ऑप्शन, एंड इसमें ना, इन द लेआउट एंड फॉर्मेट ग्रुप जो पहला ही ओपन होता है, उसमें नीचे वाला ऑप्शन देखिए, सब सेकंड लास्ट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसको डिसेबल कर देना, इसको डिसेबल कर देना, ठीक है, इसको डिसेबल कर देना। एंड प्रेस ओके, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट कर देना, इसको टर्न ऑफ करके ओके पे प्रेस कर देना। डज एनीवन हैव अ क्वेश्चन? यस अरहान। Sir, do we need to change the sales from lowest to smallest one? If you don't do that, then the top 10 will not work properly. So before you do the top 10 filter, you will have to sort your data from largest to smallest, then go and apply the top 10 filtering. Then go and apply the top 10 filtering. Sir, mistakenly I did top 10 first and then I get the correct data. कोई बात नहीं, तो यहाँ से फिल्टर हटा दो, इसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके फिल्टर क्लियर कर दो, राइट क्लिक करो, सॉर्ट कर दो, और फिर जाके फिर से फिल्टर लगा दो। Okay, okay. हाँ, सेम प्रोसेस। ठीक है, so now what I want to do is, now see, when I added, in the previous example, when I added markets to my rows, it showed me कि हर मार्केट में मेरे टॉप 5 कस्टमर्स कौन है। इट शोड मी हर मार्केट में मेरे टॉप 5 कस्टमर्स कौन है, ठीक है। अब मैं एक दूसरा फील्ड लेता हूँ, जैसे जो है, जैसे कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, मेरे पास एक फील्ड है कैटेगरी। अब इस फील्ड को अगर मैं कॉलम्स में डालता हूँ, ठीक है, इस फील्ड को अगर मैं कॉलम्स में डालता हूँ, ठीक है, इस फील्ड को अगर मैं कॉलम्स में डालता हूँ, ठीक है, तो ऑटो फिट हमने ऑफ कर दिया ना, एक बार ऑन कर देता हूँ मैं, ऑटो फिट ऑन कर रहा हूँ मैं एक बार। वो ऑटो फिट जनरली आप पिवट टेबल बनाने के बाद बंद करोगे, पहले नहीं। जैसे मैं अगर यहाँ पे कैटेगरी डाल देता हूँ, एक बार ये मेरा पिवट टेबल बन गया है, फिर मैं उसको जाके ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने पहले कर दिया होगा तो कॉलम्स को रीएडजस्ट कर देना, ठीक है, परफेक्ट। नाउ what is this telling me? Can anyone tell me what is the view that I'm getting here? What is the view that I'm getting here? Sir, the sales are divided into the categories furniture. हाँ, मतलब I'm basically seeing कि if Tom Ashbrook has given me a total sales of 40,000, what categories he has purchased from, what product categories has he purchased, ठीक है। So I get this nice kind of a pivot table view. Again, I don't have to tell you why this would have taken time with formulas. This would have, आपको सम इफ ही लिखना पड़ता, आपको सम इफ ही लिखना पड़ता। एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा बीच बीच में। बताओ कैसे करेंगे। अगर मुझे ये नंबर्स चाहिए यहाँ पे, ग्रैंड टोटल तो ठीक है, वो तो सम से आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे नंबर्स चाहिए इन लोगों के लिए, कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। अगर मुझे देखना है कि टॉम एशब्रुक ने फर्नीचर में कितना किया है, उसने टेक्नोलॉजी से कितना परचेस किया है, ऑफिस सप्लाई से कितना परचेस किया, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। हाँ, मुशर्रफ करेक्ट, अमाउंट स्पेंड पर कैटेगरी, दैट वाज करेक्ट। Everyone, please tell me what formula will we use here. I have to do a sum basis two conditions. What will I use?
करेक्ट, आई यूज सम इफ एस, सम इफ एस यूज करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास कस्टमर नेम का भी क्राइटेरिया और कॉलम कैटेगरी का भी क्राइटेरिया। सो आई से इक्वल टू सम इफ एस, नॉट सम इफ, तो सम इफ में एक ही कंडीशन होगा, एक ही क्राइटेरिया होगा, सम इफ एस में मल्टीपल होंगे। सम इफ एस में पहले आप आपका सम रेंज चूज करोगे, आई विल से माय सेल्स कॉलम इज माय सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1 में चूज करता हूँ माय कस्टमर नेम, ठीक है, come back, this is my criteria 1, then come and choose my criteria range 2, which is category, which is right here, control backspace, comma, and I will have to select my criteria, which is furniture. तो मेरा पहला पार्ट है मेरा सम रेंज, सेकंड पार्ट है क्राइटेरिया रेंज 1, फिर व्हाट इज द क्राइटेरिया, देन द थर्ड पार्ट। अब इसमें मुझे कुछ फ्रीज भी करना होगा, इस पूरे डेटा में मुझे किन किन चीजों को फ्रीज करना पड़ेगा, प्लीज लेट मी नो, because I have to drag this formula to the right and I have to drag this formula down as well. So what are the things that I will have to need to freeze? What are the ranges that I will have to freeze in this data set? Any one of you please raise your hands. I will ask you and you can unmute and say. In this formula, what are the ranges that I will have to freeze? किस टाइप का फ्रीजिंग करना पड़ेगा मुझे? डॉलर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। Any one of you? We have done dollar signs, correct? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो डॉलर साइंस का पर्पस क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ, खुशनुमा, आप अनम्यूट करके बता सकते हो? आपने लिखा है $W $3। Any one of you? Okay, answer this question. L2 से L51291, I have my sales values. When I copy the formula to the right, do I want this column to move? When we drag the Do I want formula, this sir, column? if we put a dollar sign, when we drag the formulas, the range will not move. The range will be fixed. The range Correct, or correct. So is the target cells. or this cell reference. Correct. Now in this case, what all do I have to fix? This in the first case, L2 से L51291, what all do I have to fix? मुझे पूरा रेंज, मुझे तो पूरा रेंज फिक्स करना पड़ेगा ना, बिकॉज मेरा सेल्स कॉलम, वो तो एक कॉलम है, L2 से L5 में मेरे सेल्स वैल्यूज हैं, L51 में L51,200। तो जब मैं राइट जाऊंगा, डाउन जाऊंगा, वो रेंज तो मूव होनी नहीं चाहिए। सिमिलरली जो मेरा क्राइटेरिया रेंज है, मैं टॉम एशब्रुक को इसी रेंज में ढूंढूंगा ना, रो नंबर 2 से रो नंबर 51,291 ऑफ कॉलम सी, मैं उसको किसी और कॉलम में नहीं ढूंढ सकता हूँ। सो आई विल हैव टू फ्रीज दैट एज वेल। सिमिलरली आई विल हैव टू फ्रीज दी अदर क्राइटेरिया एज वेल, क्राइटेरिया रेंज। और W3 और X2 में, W3 में क्या है, कस्टमर नेम है। तो जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर नेम शिफ्ट हो, तो टॉम एशब्रुक शुड बिकम तमारा, तो मैं रो को फ्रीज नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, क्या मैं चाहता हूँ कॉलम W शिफ्ट हो? नहीं, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया है वो हमेशा किस कॉलम में, W3 कॉलम में। तो मुझे क्या फ्रीज करना है, कॉलम। तो मैं FN F4 या फंक्शन F4 दबाऊंगा 3 बार, ताकि डॉलर साइन जो है वो मेरे कॉलम रेफरेंस के पहले आ जाए। सिमिलरली इन केस ऑफ X2, the criteria is in my rows. Do I want furniture to become office supplies and technology when I drag the formula to the right? Yes, because that is how the criteria will be calculated. That is how the final amount will be calculated. So I want it to shift. So in this case, I will have to freeze the row, because when I move down, I don't want that row to move. And simply then I can do a control down and a control R, and I can expand, and I will get the result. एक बार ये formula देखो, कुछ नहीं समझा तो पूछो, and let me know if you guys need a revision of some topic. हम एक सेशन नया नहीं सीखेंगे, हम रिवीजन कर लेंगे।
Is this formula clear? There are 44 of you on call. Is this formula clear? There's no point of learning a new topic अगर आपको पुराने टॉपिक में कुछ याद नहीं है. ठीक है. I'm assuming it is understood. I'll come back to the pivot table. Perfect. So here I simply get a very nice calculation that tells me कि मेरा across the different categories उस customer ने कितना contribution किया है. ठीक है. अब मुझे अगर इसी के percentages calculate करने हैं, अभी अगर मुझे इसी का percentage calculate करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाहता हूँ कि टॉम एशब्रुक ने जो 40,000 रुपए का सेल्स दिया है कंपनी को, what percentage came from furniture, what percentage came from office supplies and what percentage came from technology. How do I do that? So what I'll do is I'll copy this pivot table, कंट्रोल ए से मैं pivot table को कॉपी करूंगा और यहीं पे राइट में मैं pivot table को पेस्ट करूंगा ताकि आप दोनों जो है एक साथ देख सको, दोनों व्यूज जो है आप एक साथ देख सको. नाउ एक तरफ यू आर सीइंग द एक्चुअल वैल्यूज, एक तरफ आई वांट टू शो यू द परसेंटेज. वन साइड आई वांट टू शो यू द परसेंटेज. I don't need the pivot table field list. I don't need my headers. Okay. Perfect. Now on the right pivot table, जो मैंने pivot table right पे copy किया है, मैं किसी भी एक value पे sales value पे right click करूंगा and I will come to this option called show value as. I will come to this option called show value as. इसमें I will come to the fourth option which is percentage of row total, which is percentage of row total. It will display all the values in each row. It will display all the values in each row as a percentage of the total for the row. So when I click on this, all my rows become 100%. All my rows become 100%. Okay? All my rows become 100%. And I don't know why this got sorted. Maybe it was because of the first column. That is okay. All my rows become 100%. And you can see that Tom Ashbrook का जो total sale है of 40,000, Tom Ashbrook का जो total sale है 40,000 का, right? That is now you get the percentage के उसका कितना sale has come from furniture category, what is the amount that has come from office technology supplies, and what is the amount that has come from technology, right? So simple right click allows you to do very nice mathematical calculations as well. Very nice mathematical calculations as well. You can call this percent of row total. You can call this sheet percentage of row total, and you can rename the pivot table as well. इसको आप कर दो customer category value, इसको आप कर दो कस्टमर कैटेगरी परसेंटेज. ठीक है. पहले पिवट टेबल को आप नेम दे दो कस्टमर कैटेगरी वैल्यू, दूसरे पिवट टेबल को आप नेम दे देना कस्टमर कैटेगरी एंड परसेंटेज. हाउ इट टू लास्ट कॉलम एज टोटल परसेंटेज, बिकॉज इकबाल व्हेन आई राइट क्लिक, लेट मी रिमूव द कैलकुलेशन. ठीक है. सो आई वांट टू नो दैट फॉर ईच कस्टमर what is the contribution that they have, what is the amount that what is the percentage of amount that has come from each of the category. इन्होंने कितना टोटल सेल्स का कितना परसेंट उन्होंने ऑफिस प्रोडक्ट्स पे स्पेंड किया, फर्नीचर पे स्पेंड किया, टेक्नोलॉजी पे स्पेंड किया. तो जब मैं राइट क्लिक करता हूँ पिवट टेबल पे एंड आई गो टू दिस ऑप्शन कॉल्ड शो वैल्यू एज, मैं कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन रन कर रहा हूँ व्हिच इज परसेंटेज ऑफ रो टोटल. तो वो रो को 100 बना देता है क्योंकि मैं रो लेवल पे देख रहा हूँ. व्हेन आई एम सेइंग परसेंटेज ऑफ रो टोटल, आई एम गेटिंग द परसेंटेज, getting the percentage of the row total. So it makes the row 100, it makes the row total 100, right? It makes the row total 100, and then simply basically what I'm doing is 6831 divided by 40,000, 12856 divided by 40,000, 20.799 divided by 40,000. लेकिन ये मैनुअली करने में बहुत टाइम जाएगा. तो जब आप परसेंटेज ऑफ रो टोटल कहते हो तो हर रो का जो टोटल है, हर रो का जो ग्रैंड टोटल है उसको 100 बना देता है. ठीक है. So across the top 10 customers, you can see that maximum contribution has come from the technology field. Maximum contribution has come from the technology field, and the lowest contribution has come from the office supplies field. Lowest contribution has come from the office supplies field. Please do this, everyone. Let me know if you have any questions.
Please do this, everyone. Let me know if you have any questions. वो you can copy and paste simply. वो resize इसलिए ऑफ है क्योंकि मैंने ऑटो फिट ऑफ रखा है. ऑटो फिट अगर आप ऑन कर दोगे ना और उसके बाद आप कॉपी पेस्ट करोगे, जैसे इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, तो इट शुड हैव आइडियली अपडेटेड. सॉरी, 1 सेकेंड. अगर वो अपडेट नहीं होता ना ऐसे, तो बस कुछ नहीं, आप फिर से एक बार जो सेगमेंट है उसको, कैटेगरी को हटा के एक बार फिर से ड्रॉप कर देना, वो ऑटोमेटिकली रिसाइज कर देगा. मतलब हर कॉलम पे जाके डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वो फील्ड को एक बार, जिस कॉलम में जो फील्ड है ना, उसको हटा के एक बार वापस डाल दो, सो इट विल ऑटोमेटिकली रिसाइज. बट अगर ये चाहते हो आप कि ऑटोमेटिकली रिसाइज हो बार बार, तो आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन रखना पड़ेगा. ठीक है, आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन रखना पड़ेगा. ठीक है, आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन रखना पड़ेगा. ठीक है, so let me just right click, show value as percentage of row total. Great. I hope this is done, everyone. Perfect. So Iqbal, Madiha, I hope your questions are answered. ठीक है, great. Now let us look at a bit of conditional formatting also. तो मैं आपको दो तरीके की कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाता हूँ. अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं आपको बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाता हूँ. नेक्स्ट पिवट टेबल सेशन में मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ में भी दिखा दूँ. सो when I select, I will select all the values on which I want to apply a conditional formatting. I will select all the values on which I want to apply a conditional formatting. Right? Let's do it on the percentage column. Let's do it over here. कहीं भी कर सकते हो आप, जहाँ वैल्यू है वहां भी कर सकते हो, जहाँ परसेंटेज है वहां भी कर सकते हो. ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो on text or numbers, whatever you want. Conditional formatting apply करने के लिए first you will select all the numbers. Remember, I am not choosing grand totals. ठीक है, I am not choosing grand totals. I will come to home, and under home I have this option called conditional formatting. यहाँ पे I will go to the first option, fourth option called color scales. I will come to the fourth option called color scales, and I will इसमें I'll choose the first one, which is green, yellow, red. जो मेरे हाईएस्ट वैल्यू को ग्रीन बना देगा, मेरे लोएस्ट वैल्यू को रेड बना देगा, एंड मेरे मिडिल वैल्यूज को येलो का ग्रेडियंट बना देगा. ठीक है, सो व्हेन आई चूज दिस, it will create this heat map sort of an effect for me. It will create this heat map sort of an effect for me. It will create this heat map sort of an effect for me. It will create this heat map sort of an effect for me. Home, conditional formatting. But remember, you have to choose the cells where you want to apply the conditional formatting before you go and apply it. Without that, it will only apply on one single cell. Without that, it will only apply on one single cell. Okay. Without that, it will only apply on one single cell. Okay. ना ये बहुत बेसिक वाला है, तो इसमें वो वैल्यूज बाय डिफॉल्ट पिक करता है. इट विल अज्यूम, इट विल कैलकुलेट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू, एंड वो उस परसेंट 50th परसेंटाइल के बेसिस पे वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. इनको मॉडिफाई कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा. कि अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो रूल है कि आप चाहते हो कि आपको दूसरे कलर्स चाहिए या आपको दो ही कलर चाहिए, आपको ग्रेडियंट नहीं चाहिए, आपको लेट्स से रेड और ग्रीन चाहिए या ब्लू और ग्रीन चाहिए, व्हाटएवर मॉडिफिकेशंस बेसिस द नंबर यू वांट टू मेक, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक बार दिखा दूंगा. फॉर नाउ you just apply the conditional formatting. For now, you just apply this conditional formatting. This one is called color scales. This one is called color scales. This one is called color scales. I chose the first one. अगर आपने ये वाला अप्लाई कर लिया है, अगर आपने ये वाला अप्लाई कर लिया है, राइट, देन व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आप आपके ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट करोगे. 100 को चूज नहीं करना है. 100 पे कुछ भी करोगे तो वो हाईएस्ट ही होगा ना, तो 100 पे करने का कोई पॉइंट नहीं है. 100 पे कैलकुलेट करने का कोई पॉइंट नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हमारे ग्रैंड टोटल वाले रो को चूज करेंगे. हम हमारे ग्रैंड टोटल वाले रो को चूज करेंगे. ठीक है, जिसमें 3 वैल्यूज को चूज करूंगा मैं. ग्रैंड टोटल 100 को नहीं चूज करूंगा. देन आई विल कम बैक टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड नाउ इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग आई विल चूज डेटा बार्स. आई विल चूज डेटा बार्स. ठीक है, इसमें आप कोई भी डेटा बार चूज कर सकते हो जो आपको करना है. ठीक है, इसमें एक होता है सॉलिड कलर, एक होता है ग्रेडियंट कलर.
basically this is like a bar inside your cell. I'll choose yellow just for reference. So in fact, let me make it green. Okay, this is like a bar inside your cell. So when I choose data bars, you can see that. Let me choose something else. Let me do this. When I choose data bars, तो क्या करता है? It will fill the cells. It will fill the cells, right? It will fill the cells with the bars. It will fill the cells with the bars. अभी वो colors are matching. That is why it is looking that way. So अगर आपको डेटा बार अप्लाई करना है ना, एक काम करो, आप इस पे मत करो, आप आ जाओ आपके वैल्यू वाले टेबल पर, आप आ जाइए आपके वैल्यू वाले टेबल पर, और वैल्यू वाले टेबल में आप आपके रोज को सिलेक्ट कीजिए सारे, ग्रैंड टोटल चूज नहीं करेंगे, सिर्फ फर्नीचर, ऑफिस, टेक्नोलॉजी और 10 कस्टमर का जो टोटल सेल्स है उसको चूज करेंगे, ग्रैंड टोटल वाला रो और कॉलम स्किप करेंगे, और यहाँ पे आके आप डेटा बार में जो भी चूज करेंगे, हाँ दिस विल लुक मच बेटर। तो वहाँ पे ना इट इज मर्जिंग विद द कलर्स, लेट मी रिमूव दैट अभी के लिए। तो एक तरफ हमने अप्लाई किया कलर स्केल्स ऑन द परसेंटेज, एंड ऑन द नंबर्स वी हैव अप्लाइड डेटा बार्स, we have applied data bars. So this is like a visual and a table inside the same thing. So very nice way of presenting, very nice way of presenting, okay. Very nice way of presenting, okay. This is called conditional formatting. This is called conditional formatting, right? This is called conditional formatting. Let me know if you have any questions, right? This is the last example for today, okay. Iske baad I'll not be covering any other examples since we only have 2 minutes left, right? In the next session also we'll continue with pivot tables. Please save this file. Please save this file so that we know how much we've done in the last session, and we can come back and continue working on what is going to come next. Okay. Please save this file. Please save this file. Okay. Let me know if you have any questions, anyone. See, pivot table is the most interesting thing that is Excel has to offer. हाँ वो there is some वो it is not taking it correctly because यहाँ पे जो 53% ना, it is an aggregation of these values. Basically जैसे ये जो रो है उसका कैलकुलेशन है वो, तो उसमें कुछ एरर हो रहा है इसलिए इट इज टेकिंग 53 के लिए पूरा, बट किसी और केस में इफ यू डू नॉट डू इट ऑन द ग्रैंड टोटल, अब बाकी नंबर्स पे करोगे तो इट विल कम करेक्ट, राइट? इसका आई एम नॉट श्योर कि 53 के लिए पूरा डेटा बार क्यों दिखा रहा है, इवन आई विल हैव टू चेक एक बार, आई एम नॉट श्योर व्हाई। मैं चेक करके नेक्स्ट सेशन में जब हम करेंगे ना मैं बता दूंगा। लाइक आई वाज सेइंग, पिवट टेबल्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नहीं टॉप 10 रोज देता है, लेकिन पहले मैं सॉर्ट करता हूँ ना। नहीं, इट इज नॉट जस्ट गिविंग मी टॉप 10 रोज, इट इज गिविंग मी टॉप एन वैल्यूज, it is giving me top 10 values, right Arhan? It is giving me top n values, and Iqbal, we have to customize them using the data bus. Customize you will have to do in every case. If you're applying any conditional formatting, by default it will pick up whatever it is picking. If you want to make any changes, let's say you want to highlight only the first 10 values and nothing else, वो सारा customization आप कर सकते हो conditional formatting में जाके, वो मैं next session में दिखाऊंगा जब हम pivot table के और examples करेंगे, तो next session में I will show that. Okay, great. So in case anyone, you can no you don't have to give a formula, simple drop down होता है, okay, there is a simple drop down, आप choose कर सकते हो, आपको value type करने के लिए boxes होते हैं, why it will take a little longer, that is why I did not touch upon it today, right? Great. Okay, everyone, I'll be sending a assignment on the group today. You will have to submit it by tomorrow EOD, ठीक है? I will send an assignment on the group, you will have to submit it by tomorrow EOD. मैं गूगल फॉर्म फ्लोट कर दूंगा, उसमें आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? Perfect. Anyone, any question? I'll stop the recording now.